Welcome to today's online session. In the last session, we have done development in India from 1950 to 1990. We have done the objectives of the planning which is done during these 40 years. No doubt, this planning continued after 1990, even till 2017, till Planning Commission changed to Policy Commission. This planning continued, but the time period of 1950 to 1990 was very, very crucial for the Indian economy, because Indian economy has to achieve certain objectives. The objectives we have done in the last video, that was modernization, growth, then social justice, then equity with equality, as well as modernization and self-reliance, and above all, full employment. Now, how the government tried to deal with these objectives, how the government tried to achieve those objectives in these 40 years. Because till 1990, 7 5-year plans were completed. Every plan is of 5 years, but due to Indo-Pak War, Indo-China War, there were annual plans also, 1 year or 3 year plans. So during that, these plans, there were 40 years of planning. And in this planning, certain objectives were achieved. But to achieve those objectives, we have to go for certain things. कुछ चीज़ां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ we have to develop certain areas ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ goals ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ policy measures ਉਹਨਾਂ objectives ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, that is key role to the public sector, because बिना public sector ਦੇ बिना government investment ਦੇ possible नहीं है उस वेले ਦੇ time ਨੂੰ achieve करना। Public sector is that sector which is owned and controlled by the government, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ investment government ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, government ਦੇ through run ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that is known as public sector। ਇਹ 'ਚ departmental ਵੀ ਹੈ, non departmental ਵੀ ਹੈ। Departmental ਜਿਹੜੇ budget ਦੇ through directly ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ funding ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and non department are some companies ਜਿਹੜੀ government ਦੇ through run ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। So ਉਹ departmental, non departmental ਸਾਰਾ is known as public sector, that is the government sector। So that was the first and basic foremost, that is the measure taken by the Indian government कि public sector ਨੂੰ develop करना। So ਇਹ ਜਿਹੜੀ planning है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ public sector ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ dilute the inequalities, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ inequalities government ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ market forces ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ capitalism ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ, ਦੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰਸ, ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ, ਡੈਮਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੈਮਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੰਬਾਈਨ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ provision of basic infrastructure। Basic infrastructure ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, one is economic and other is social। economic ਦੇ ਵਿੱਚ basic facilities ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ is your transport, then steel, railways, post and telegraph, then heavy industries, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ basic infrastructure ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ, એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। then
The next one was provision of basic infrastructure for economic development. कि किसी कंट्री की डेवलपमेंट उदो ही होएगी जो ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होएगा. इहदे बिना प्राइवेट सैक्टर भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में चीप ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर मार्केट्स, सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, they will not able to raise their production. Then there was another was reducing poverty through supply of essential commodities. सरकार ने फार्मर्स ते गरीबां दोनों ਨੂੰ safeguard ਕੀਤਾ providing MSP. ठीक है, उन्होंने राशन शॉप्स, राशन डिपो के थ्रू चीज़ां जड़ियां सी वो लोगों को सस्तियां प्रोवाइड कीतियां राशन कार्ड्स के थ्रू, ताकि अपनी बेसिक जरूरतां पूरियां कर सकन. उधर फार्मर्स जिहड़े सी उन्होंने जी खरीद का मुल सी, फसल का मुल सी, उन्होंने प्रॉपर पे किया ताकि वो भी अपनी जी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी रेस कर सकन. उन्होंने फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड किए सबसिडीज देते ताकि वो भी प्रोडक्शन रेस कर सकें. नेक्स्ट सी एक तो फार्मर्स में MSP दिता गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो लोगों को राशन शॉप के थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड की. अगला सी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल कि एग्रीकल्चर इज अ क्रूशियल सैक्टर, कह सकते हो कि बेस है साडी इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी जी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है. अगर साडा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, असी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते. सो उस एग्रीकल्चर के बहुत सारिया प्रॉब्लम सी जिन्हों मेनली इन्होंने किहदे थ्रू इंप्रूव किया, दैट इज लैंड रिफॉर्म. देन इज द इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट, IPRs कहते हैं 1950. दैन उस तो बाद ये एक्ट्स किए गए जिहदे विच प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अलाउ किया गया, उन्होंने अलग अलग लाइसेंस, अलग अलग चीज़ां इशू कर लग्या, किस तरह उन्होंने अपना लाइसेंस लैना, किहड़ी चीज़ तो वो बना सकते कि नहीं बना सकते, वो अकॉर्डिंगली सारे जोड़े एक्ट सी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, मोनोपलीज ना बनन देनिया, वो सारिया इस एक्ट का पार्ट सन. दैन इस कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. अगला सी फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करना. फॉरेन ट्रेड मीनस कि जिहड़ा असी चीज़ां ऑलरेडी बाहरों मंगा रहे हैं या असी भेज रहे हैं, उहदे विच गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी क्रिएट की थी, दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि उन्होंने चीज़ों की इंडस्ट्री वाल ज़्यादा ध्यान देना जिहड़ियां चीज़ां असी बाहरों मंगा रहे हैं, ना कि आप उन्होंने वरत रहे. दैट वाज द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, राइट. इस तो इलावा जिहड़ा सरकार ने बाकी सारे प्लान्स सन, अलग अलग हूँ तक 7 ईयर प्लान्स, उन्होंने प्लान्स का सरकार ने हर प्लान दे विच अलग अलग मोटिव रखा. उस मोटिव दे विच कुछ वो मोटिव्स इस तरह सन. In the table, first 5-year plan started in 1951 till 56 and 12th plan completed in 2017. But after 2017 सरकार ने कोई फॉर्मल प्लान नहीं बनाया, बिकॉज पॉलिसी कमीशन, प्लानिंग कमीशन टू पॉलिसी कमीशन चेंज हो गया. बट उस तरह प्लान ऐसा चल रहे हैं जिहदे विच कुछ सरकार दियां पॉलिसीज़ ने. फर्स्ट प्लान का मेन मोटिव सी प्राइमरी सैक्टर की डिवेलपमेंट, जिहदे विच एग्रीकल्चर मेन बेस है. सैकेंड दा इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट, पब्लिक सैक्टर ते फोकस सी. तीसरे दे विच ओवरऑल डिवेलपमेंट सी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की, ताकि फॉरेन ट्रेड दे विच भी असीं सारी चीज़ां बना सकीए जो असीं बाहरों मंगा रहे हैं. Then there were plan holidays for 3 years due to some problems. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ equal priority ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ. ਦੈਨ ਅਗੇਨ फोर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ. ਦੈਨ employment, poverty elevation in the next, and then rolling plan rate 2 years करके, ताकि असी 5-year plans जी प्रॉब्लम्स आ रही सी उन्होंने ओवरकम कर सके. इस तरह 6th ते 7th plan दे विच द प्लान स्टाइल चेंज, क्योंकि असी लिबरलाइजेशन, प्राइस कंट्रोल घटाते, इकनॉमिक प्रोडक्टिविटी ते जोर दिता, फूड प्रोडक्शन की जोर दिता, employment जनरेट थ्रू की थ्रू सोशल जस्टिस. then again there were annual plans
due to the change in policy of the Indian government in 1991. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 8th 9th 10th 11th 12th ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਵਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਔਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਮੀਨਸ that every person should be part of the growth or the part of the GDP, ताकि हर बंदे नू GDP ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ equally ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ growth ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ. I hope it's clear till now.